SBA Publications. Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are happy and healthy in your home. This is your mentor Soni Sati, and today with me we are starting our chapter number 4 working with MS Word 2016. So आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि MS Word है क्या और इससे हम काम कैसे करते हैं. So we all know that MS Word में हम documents बनाते हैं. So let's make how to make a document. Here in this chapter we will learn use of various features for editing and formatting. Now, editing and formatting of words. Use shortcut keys. Now, in this chapter, we also will know that what are the shortcut keys for the options. Then prepare a document based on their requirement. So, हमारी जैसी भी requirement है उसके according हम कैसा document बनाएंगे. Now, preview and print a document. बनाने के बाद एक बार उसका preview and उसको print करने का भी procedure जानेंगे. First of all, let's do warm up. First question is name any two component of Microsoft Word window. So Microsoft Word window के दो components बता देते हैं. So we can say working area and title bar, ribbon, etc. Okay, and similar way you will write the second and third answer also. Now let's start with the explanation of this chapter. MS Word is a window based on word processing software provided by Microsoft company. Microsoft company से हमें ये launched हुआ window के according word processing software है हमारे पास. Okay, इसमें हम क्या करते हैं? It is a part of the Microsoft Office package and mainly used for creating documents. इसमें हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं. ओके, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं. In this chapter, you will learn about the different tools and commands which are used to edit a document. इस चैप्टर में हम different commands and options को जानेंगे जिनसे हम document को edit करते हैं. Like making changes or modifying the text wherever possible. Okay, so जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम अपने document को change करेंगे, edit करेंगे. So first topic is typing and inserting text. To enter text, just start typing in MS Word. So जैसे आपको input देना है, text को in करना है, text को लिखना है screen पे, so you have to just start typing. Okay, you have to just press the keys of keyboards. Now the text will appear where the blinking cursor is located. So आपका जो blinking cursor होगा वो जहाँ पे भी located होगा वहीं पे सीधा आप text insert कर रहे हैं. टेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली रैप टू द नेक्स्ट लाइन. जैसे ही आप लास्ट लाइन पे आएंगे टेक्स्ट आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. अगर आप लाइन के लास्ट में आ रही हैं सो एंटर करते ही या फिर आप टाइप करते करते ही देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन पे अपने आप आ गया है कर्सर. मूव द कर्सर बाय यूजिंग द एरो बटन्स ऑन द कीबोर्ड और पोजिशनिंग द माउस एंड क्लिकिंग द लेफ्ट बटन. सो आप माउस को यूज कर सकते हैं, कर्सर को यूज कर सकते हैं बाय जस्ट मूविंग द एरो. ओके, now you can do the clicking and right clicking, left clicking in keyboard. Okay, now अगर आपको बीच में कहीं insert करना है तो you have to just take out your mouse and position somewhere and then just click it. Okay, now if you want to start a new paragraph, अगर आपको paragraph new start करना है, hit the enter key, then just enter key. Okay, then just hit enter key. Okay, now what is undo and redo? Undo means जो आपने किया है उसको वापस लाना. Redo उसका opposite. Okay, see, undo is a command to erase the last change done to the document. आपने document में जो भी last change किया है उसको last वाले को erase कर देना. Okay, आपने जैसे मान लो आपने x लिखा, so अब आपने जैसे undo बटन दबाया तो वो x हट जाएगा. आपने अगर कोई पिक्चर इंसर्ट की है सो आपने जैसे undo बटन दबाया तो वो पिक्चर हट जाएगी. It reverts the document to its
older state. The opposite of undo is redo. Redo reverse the undo. To use undo and redo, follow these steps. So redo is the reverse of undo. So अगर आपने वो image insert की हुई को हटा दिया with the help of undo. So अगर आपको याद है अरे नहीं ये तो मैंने सही किया था. So you have to just redo it. Okay, तो आपको उसके बाद redo की key use करनी है and then आपकी वो image वापस आ जाएगी. Okay, so redo is the reverse of undo. So to use undo and redo, we have to follow these steps. That is, step number 1, type hi there. Step 2, click on undo in the quick access toolbar. Step 3, the typing word disappear. जो आपकी typing होगी वो disappear हो जाएगी. Then step 4, click on redo. Step 5, the typing would reappear. So आपकी उसके बाद जो typing आपने जो किया था वो reappear हो जाएगा. This may well became your favorite button on the toolbar. और ये हो सकता है कि आपके favorite button भी बन जाए toolbar में से. So now we have the second topic, that is spelling and grammar check. That is spelling and grammar check. So MS Word में हमें एक benefit होता है कि अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो उसको वो सही कर देता है. Like spelling and grammar check हो जाती है. See how? One of the wonderful things about Microsoft Word is that it checks your spellings and grammar as you type. Spelling errors are displayed with a red wavy line. So, जब भी आप टाइप करेंगे टेक्स्ट और आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग एरर आ जाए, सो उस वर्ड पे, उस टेक्स्ट पे एक रेड वेवी लाइन आ जाएगी. लाइक दिस वी कैन सी हियर अंडर द वर्ड. Now grammatical errors are displayed with the green wavy line. और अगर आपकी कोई grammatical mistake हो गई है, so you will see green wavy line. Okay. Under the error, there are several ways to check your spelling. हमारे पास काफी सारे ways होते हैं spelling को check करने के लिए. To check spelling and grammar mistakes, follow these steps. Step number 1, open the document in which you want to apply spelling and grammar. So, आपको सबसे पहले document open करना है जिसमें आपको spelling and grammar को check करना है. Step 2, click on review tab. सबसे पहले आपको review tab पे जाना है. Then click on spelling and grammar पे जाना है. Okay, the spelling and grammar dialog box will appear. और आप देखेंगे कि जो spelling और grammar का dialog box है वो reappear हो जाएगा, appear हो जाएगा. The first box shows the mistake. The next box shows the suggestion for the mistake. Displays the suggestion for the mistake. So जो first box होगा उसमें आपके सारी के सारी mistakes आएंगी. ओके, और सेकंड वाले में आएगा सजेशन फॉर द मिस्टेक. ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई है YO. सो फर्स्ट वाले में दिखाएगा कि आपने गलती लिखी है YO. एंड द सेकंड बॉक्स विल शो कि आप इसको यू कर सकते हो, यो कर सकते हो. ओके, एंड सो ऑन. नाउ स्टेप 4, क्लिक ऑन द करेक्ट सजेशन. जो भी आपको सजेशन सही लगता है आप उसे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन चेंज. उसके बाद आप चेंज क्लिक करेंगे टू चेंज दैट मिस्टेक एंड और चेंज ऑल टू चेंज ऑल द सिमिलर मिस्टेक. फॉर एग्जांपल आपने जहां जहां पे यो लिखा था वो वहां पे यू करना चाहते हैं आप, तो आप इसको सिंपली टू चेंज ऑल पे चले जाएंगे. सो दैट आपने पूरे अपने जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आपने कहीं पे भी YO लिखा है सो वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ स्टेप 5, इफ यू वांट टू इग्नोर द मिस्टेक. अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आपने देखो उसमें रेड लाइंस बहुत सारी आ रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू वांट कि वो हट जाए, ओके, और इग्नोर कर दिया जाए उसे. सो व्हाट यू विल डू, देन क्लिक ऑन इग्नोर वंस टू इग्नोर वंस, कि आपको एक ही टाइम पे इसे इग्नोर करना है. एंड इग्नोर ऑल टू इग्नोर ऑल ऑफ देम इन द डॉक्यूमेंट. ओके, और अगर आप चाहते हो कि ये रेड लाइन जो है इस वर्ड की पूरे डॉक्यूमेंट में है और आप इसको इग्नोर ऑल करना चाहते हो कि ये नहीं दिखे, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, सो यू विल जस्ट यूज इग्नोर ऑल ऑप्शन. नाउ स्टेप 6, क्लिक ऑन ऐड टू डिक्शनरी. अब आपके पास स्टेप 6 क्या है, क्लिक ऑन ऐड टू डिक्शनरी. डिक्शनरी में ऐड करने के लिए. If you want to add the word in the dictionary of Microsoft Word 2016, for example, कोई आपकी कंपनी का नाम है जो कि ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग एरर है अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नाउ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बार बार यूज करूंगा, लाइफ टाइम यूज करूंगा और ये बार बार मिस्टेक आ जा रही है, सो यू कैन
Speed up that in Microsoft Word 2016 in your window. Okay, by using this step 6. Okay. Now when all the mistakes are corrected, then a message box appear. अब जैसे ही सारी mistakes हट जाती हैं, एक message box आता है. Step 7, click on OK. So you have to just click OK. Spelling and grammar check is complete. Then you have to just click OK. Now facts.com. To open spelling and grammar dialog box, press F7. So अगर आपको grammar and spelling dialog box को check करना है, so you can just press F7. Again, it is a shortcut key. Now, checkmate. Visit computer lab and open the previous document that you have created. अपने कंप्यूटर लैब में जाएंगे और जो आपने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट बनाया था उसको ओपन करेंगे. नाउ चेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स इन देम. और उसके बाद उसमें ग्रामर और स्पेलिंग्स की चेक करेंगे आप. देन सेव एंड क्लोज द डॉक्यूमेंट. उसके बाद उसको सेव करेंगे एंड डॉक्यूमेंट क्लोज करेंगे. सो इट्स योर एक्टिविटी. नाउ वी हैव यूजिंग thesaurus. So thesaurus is a feature that enables to proofread or edit the documents. So ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमें प्रूफ रीड और डॉक्यूमेंट को एडिट करने में हेल्प करता है. इट कंटेन्स सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स. सो ये क्या कंटेन करता है? ये सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स कंटेन करता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड लिखा, उसका कोई सिनोनिम्स है, सो ये यहाँ पे आपको शो करता है. टू यूज thesaurus, follow these steps. Step number 1 is open the document which you want to edit by clicking on the file. Now select the word which you want to change. For example, I want to change this clearly. Okay, here it is written clearly. You can see in your school book also. Now step 2, click on review tab. After selecting this, you have to just go to the review tab. Now click on thesaurus in proofing group and then just proofing group में आपको thesaurus को click करना है. We can see here this is a proofing. So here you have to use thesaurus. Okay. Now research navigation pane will appear on the right of the document. आप देखेंगे कि document के एकदम right पे research navigation pane open हो जाएगा. Now various suggestion for the selected word will appear in that pane. Now step 4 is place the mouse over the word you want to use. और इसके बाद आपके पास बहुत सारे synonyms आ जाएंगे. You have to just place the mouse and click over which you want to choose. Now step 5, click on the down arrow of the word. A drop down menu list will appear. So आप देखेंगे जैसे आप down arrow पे जाएंगे, drop down menu open हो जाएगा. Okay. लिस्ट अपीयर होगी. देन क्लिक ऑन इंसर्ट. उसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे. ओके. द वर्ड विल अपीयर इन प्लेस ऑफ सिलेक्टेड वर्ड. सो आपने जो सिलेक्टेड वर्ड था उसकी जगह पे वो इंसर्टेड वर्ड दिखने लगे. ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द रिसर्च नेविगेशन पेन. और जब आपका वो इंसर्ट वाला वर्ड आपको दिखेगा देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द राइट रिसर्च नेविगेशन पेन. Now remember to save the changes. Click the save or save as button or press Ctrl S. So अगर आपको इसे चेंज करना है, only for that condition, you have to just click the save or save as a button or press Ctrl S. And student, you know, save and save an option is located in, yes, you're right, located in the file menu. Okay. Now after that we have a checkmate, again an activity that you have to do in your school lab. Now we have formatting. So what is formatting? Formatting means to change the appearance of our document. So that also means styling. So अगर आपको appearance को enhance करना है, change करना है, so you will use formatting. Formatting makes our document beautiful and attractive. ये हमारे document को beautiful and attractive बनाता है. It also emphasize on the important part of document. और ये हमारे document की important parts को भी emphasize करता है. Okay. Let's learn how to format Microsoft Word document. Changing font size and color. How we change font size and color. A font is a set of printable or displayed text characteristic in a special style and size. Now what is changing font? When we open Microsoft Word, a default font appear to type the text. जब भी हम Microsoft open करते हैं then we see कि एक default
बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट से ही हम टाइप कर रहे हैं, बट व्हाट इफ वी वांट टू चेंज द फॉन्ट? सो अगर हम इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, follow the given step. The step number 1 is select the text to change the font. So जिस भी आपको टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, यू हैव टू सेलेक्ट इट, देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो और click on the drop down arrow of font option in font group in home tab. Then step 3 is left click on the font you want to apply and just you will see that आपको font apply हो चुका है. The font of your text will change. Now how we can change the font size? If you want to show some text bigger or smaller, for example headings, subheadings को हम थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, ओके, थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाते हैं साइज. वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट. स्टेप नंबर 1 इज क्लिक द select the text to change the font size, and step 2 click on the drop down arrow of font size option in font group of home tab and just you can increase it. How? Left click on the font size you want to apply, the font size of your text will change. Okay, now we have bold, underline and italics. हमें पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो वी यूज समटाइम्स इटैलिक्स टू इनहेंस आवर प्रोजेक्ट ब्यूटी. ओके, नाउ अंडरलाइन, हम मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देते हैं. हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को हम बोल्ड शो करते हैं. ओके, टॉपिक्स को हम बोल्ड शो करते हैं. सो हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं इन MS वर्ड. वी यूज बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक्स टू एम्फसाइज ऑन अ वर्ड or a group of words. To bold, underline, italicize and italicize text, follow the given steps. Step number 1 is select the text you want to change, okay, to change the style. Now step 2 is click one of the option or all of them from the fonts group. So fonts group में से आप या तो एक like bold, which is this one, underline is this one and italic. अगर आपको तीनों चीज चाहिए, you can select the all, और अगर आपको एक सिंगल चीज चाहिए, so you will use the single one and then the text will change accordingly. Okay, for example आप bold यूज करेंगे to bold text, so you will see that कि वो bold हो चुका है. To underline, so आप देखेंगे कि वो underline हो चुका है. And to italicize, you will see that it has been italicized. Now changing font color, you can change the color of the text to make it look nice and attractive. आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो ताकि वो नाइस और अट्रैक्टिव दिखे. सी हाउ? वी ऑल नो कि हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम काफ़ी सारी हेडिंग्स को डिफरेंट कलर्स से यूज़ करते हैं. वी यूज़ मार्कर्स, हाईलाइटर्स. ओके, सो व्हाई सो? बिकॉज वी नो दैट different colors will make it look attractive. Okay, attractive. So to change the font color, follow the given steps. Follow the following steps. Step number 1, select the text to change the font color. So सबसे पहले उस font को select कर लेंगे जिसका आपको color change करना है. Click on the drop down arrow of font color. और font color के drop down arrow पे click करेंगे and then left click on the font color you want to apply. और जो भी आपको font color apply करना है उस पर just left click करेंगे. The font color of your text will change accordingly. Now changing alignment. What is alignment? So जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, उसे हमें अपने पेज पे कैसे रखना है. लाइक सारा इस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए. So that is alignment. So we can also change the alignment. Okay. Sometimes we need to type the text from the right, left or center. So we change the alignment of the text. To change the alignment of the text, follow the following steps. Step number 1, select the text on which you want to apply alignment. जो भी आपको टेक्स्ट को alignment change करना है, उस वाले टेक्स्ट को आपको select करना है. Step 2, click on any option from the paragraph group. So paragraph group से आपको कोई सा भी ऑप्शन चूज करना है as per your need, like left align or right align or center align or justify align. So इन पिक्चर से भी आप इसे क्लियर कर सकते हो. Okay, you can use with the help of seeing the picture. Now the alignment will change accordingly. Now we have checkmate activity. Now we have checkmate activity which you people will do in your school lab
with the help of your teacher and friends. Now changing line spacing. We can also change the line space, okay, space between the line to make it attractive. The line spacing changes the vertical distance between the lines. So vertical distance जो होता है हमारी lines के बीच में उसको change करता है in a document. Now to change line spacing in the document, follow the given steps. The step number 1 is select the text. After that, click on the drop down arrow of line spacing option from the paragraph group in home tab. So paragraph group में जो home tab में है, that is this one, and just click the drop down arrow and select the line spacing as per your need you want to apply. The line spacing will change accordingly. Now we have activity, open Microsoft Word document and then check the default line spacing of the document. You will see that default one is 1.5. After that, bulleted and numbered list. So हमने कई बार देखा है कि हम जब नोट्स बनाते हैं, सब नोट्स बनाते हैं तो we use bulletins or small lines like Roman numbers and these kind of things. So it makes a list or more beautiful or more decent. So sometimes we need to add points to our document, so we can add bullets and numbering to show the points. Okay, to apply bullet list in the document, follow the following step. What are these steps? Step number 1 is select the text. Step 2 is click on the drop down arrow of bullets option from the paragraph group in home tab. और वहाँ पे आपको बहुत तरह की चीजें दी जाएगी. For example, we can see here the picture. Okay. See 1, 2 or ABC or Roman numeral, small ABC, small Roman numeral. Okay, and the bulletins also. Bulletins is this one and numbers are this one. So select the style of bullets you want to apply. The bullets will be added to the document. To apply number list, document follow the same steps. Just select the text, click on the drop down arrow of numbered list option from the paragraph group in home tab and then just select the style of number you want to apply as per your choice. Now the number list will be added to the document. After that we have another way to add bulleted or numeral or numbered list is to select bulleted list or numbered list from the paragraph group in home tab before starting to type the text. Type the list item. So इससे भी एक अच्छा वे है कि आपको जब भी बुलेटिन्स बनाने हैं तो आप टेक्स्ट लिखने से पहले ही आप बुलेटिन्स को सेलेक्ट कर लो. सो व्हेन जब आप एंटर करोगे एंड देन यू विल सी दैट कि आपका टेक्स्ट एंटर होते होते अलग अलग बुलेटिन्स में रिटर्न होगा. Now as you will type, bullet numbers will start appearing as soon as you press enter after finishing to type a list item. Okay, as I said. Now press enter key 2 times consecutively to switch off bullet numbering. और अगर आपको numbering और bullets को हटाना है, okay, close करना है, so what you will do? You will not go and then click on that. You can use the 2 time enter key. 2 टाइम एंटर करोगे आप देखेंगे कि आपका बुलेट और वो वाला सिस्टम हट गया है. Now activity 2, solve the following. Make a list of healthy food items that a child should eat. So आपको एक बच्चा क्या हेल्दी डाइट लेनी चाहिए उसे, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है. Okay. Now second is open new Microsoft Word document and then type the above list in it and apply bullet to the list. Now save the documents and close it. Find and replace the text. Now we have the another topic of this chapter, that is you can automatically replace a word or phrase with another. So हम automatically एक word और एक phrase को change कर सकते हैं, okay, replace कर सकते हैं. To find any text, follow the following steps. So first of all हमें उसे find out करना पड़ेगा. So step number 1 is in home tabs, click replace button in edit group. Find and replace group will appear. Now step 2 is find and replace dialog box. Type the text that you want to search for in the find what text box. Now step 3 is in the replace with text box, type the replacement text जो आपको text का replacement करना है. Then do the following to replace the next occurrence of the text.
क्लिक फाइंड नेक्स्ट, और उसके बाद आपको जहाँ पे भी वो शब्द, वो लेटर, वो वर्ड फिर से आ रहा है, उधर जाने के लिए आपको नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा. ओके, फाइंड नेक्स्ट पे. देन टू रिप्लेस एन occurrence of the text, click replace once again. Now after you click replace, ms word moves to the next occurrence of the text. Now step 5 is to replace all. अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारे रिप्लेस हो जाए, so what you have to do to replace all occurrence of the text, click on replace all. आपको replace all का भी ऑप्शन मिल जाएगा. After that again we have an activity that you have to do in your school. Now we have printing a saved document. So अगर हमने document बना लिया and then हमने उसे save भी कर लिया, so because हमें save करना तो आता है, after that we have to print it. Okay, we want a hard copy of that document. So before printing a document, make sure that the printer is switched on and connected to the computer. So आप जब तक printer को on नहीं करोगे तब तक print नहीं निकलेगा. So please सबसे पहले printer को on करेंगे और उसको switch on करने के बाद ही हम start करेंगे. After that we also have to check whether that it is connected to the computer or not. Okay, after that to print a document, follow the following steps. Step number 1, click the file menu, then click the print option. Print dialog box will appear. Now below the setting, click on print all. Insert paper to print all the pages of your document, or we can do to specify the number of copies you want to print of the document in the copies box. So यहाँ पे आप copies में कितनी copies चाहिए आपको उसकी, okay? आपको उसके कितने prints चाहिए same चीज के duplicate copies. So you can change here number. Step number 4, click on the print button, and the final step is click on the print button and you will see that आपका print आ जाएगा within some seconds. Now we have key points. Microsoft Word checks your spellings and grammar as you type. You all know? Yes. Now Thesaurus is a feature that enables you to proofread or edit the document. Now formatting changes the appearance of the document, making it beautiful and attractive. Yes, because it's emphasizes the appearance of the document. Now a font is a set of printable or displayable text characters in a special style and size. So font क्या है? different styles के होते हैं, so that we can make our text. Okay, we can make our text beautiful. Now we can add points to our document with bulleted and numbered lists. We know the steps of that. Okay, now we can replace a word, a phrase with another with find and replace option. So we again know that. Okay, हमने अभी पढ़ा. Now we can print our documents by using print option in MS Word. हम MS Word में print document की help से print भी कर सकते हैं अपने edited formatted document को. इसके बाद है we have let's do it, which is our school exercise, our chapter exercise. So students, this exercise you people have to do by yourself with the help of the explanation part I just explained above. Now we have some activity and project work which you people will do in your school maths lab, in your school computer lab. So students, by here we have completed our chapter. So I hope each and every concept discussed in this chapter is getting totally clear to you. If you found any query in any topic, please go once again through this video so that your concept is totally clear. I will meet you in the next video. So meanwhile, keep on learning. Take care. Bye bye.